Now, hello students. Now this is the simplification chapter in which we are going to use BODMAS rule, and we all know BODMAS rule says that you have to solve the bracket first. Now we have to understand that we have four different type of bracket. This is called line bracket. This is called small bracket. Then we have another which is called curly bracket, and then the last one is box bracket. This is box bracket. This is curly bracket. Now here we have to understand that the first, if we in a question we have many brackets, then we need to solve this bracket first. Then we have to focus on the second bracket, that is small bracket. Then we have to focus on the third bracket, that is curly bracket, and the last sequence is the box bracket. So we have to understand in BODMAS rule, if we have bracket, then how we have to solve the bracket. We have sequence of bracket और उन सबको line से it has been told that in a sequence we have to solve those brackets. Now let us see how we have to apply this in our question. Here you can see we have this line. We don't have a line bracket, but we have this small bracket, and we will have to focus on this small bracket first. So here let us see the small bracket, and the moment you look at the small bracket and we have a target to solve our small bracket, we know that it is a small question in itself, जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन. This itself is a small question. So there are two terms. The answer for the first term is 2 plus 33. So we got the answer for this. Now we can see we have a minus sign. That means this part of the question and this part of the question are different. They are not interrelated. तो आप आराम से इसको भी simultaneously इसको solve कर सकते हो if you want. Otherwise you keep as it is and then in the next step we can solve. But there is no problem because there is a minus sign. ये अगर हम देखते हैं ये वाले बड़े वाले ब्रैकेट में, तो ये हमारा पहला टर्म हो गया पूरा का पूरा, जिसके अंदर फर्दर स्मॉल टर्म्स है, क्योंकि ये एक पूरा क्वेश्चन है. दिस इज वन पार्ट, this is second part in this curly bracket. So we can simultaneously solve this also, and we know अभी हमें आंसर नहीं मिला है, तो इस स्मॉल ब्रैकेट को अभी हम गायब नहीं करेंगे. ठीक है ना? So this is the part of the curly bracket. कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट था. स्मॉल ब्रैकेट को हमने और सिंप्लीफाई किया. देन वी हैव सेकेंड टर्म इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, जिसको हमने सॉल्व कर लिया. नाउ वी हैव 10 into, आई एम नॉट टचिंग दिस, लेकिन हम लोग इसमें भी कुछ कर सकते थे, बट लेट अस नॉट टच इट, अदरवाइज यू विल गेट confused. So here we got 33 plus 2, which becomes 35 minus 14, and because we got 35 final answer of this small bracket, तो हम लोग इस bracket को remove कर सकते हैं, and we are still not getting the answer for this part. So we have, okay, so there is a big bracket also that we have to include. All right, so here we have a big bracket also out of that, because big bracket का last part is this, तो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत भी हुई होगी, and this is the beginning. नाउ अगर आपने ये वाला ब्रैकेट देखा होगा, तो आप देखोगे कि ये स्मॉल ब्रैकेट, इसको पहले हमें टारगेट करना है, सॉल्व करना. ठीक है ना? वी हैव टू टारगेट. अगर हम बड़े ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमारे पास बड़े से भी एक छोटा ब्रैकेट है जिसको हमें सॉल्व करना ज़रूरी था, और हमने कर भी लिया. और एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये है बड़े ब्रैकेट का, और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का
ये भी है, अगर आप चाहो तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो बिकॉज दैट इज सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन. नाउ वी हैव अ प्लस साइन. ये हमारा बड़े ब्रैकेट का कंटेंट है. बड़े ब्रैकेट में हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया. इसको भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी आप वेट कर सकते हो. ओके, लेट मी नॉट टच, otherwise you will get confused, so let us do it as it is. Let us focus only on this part of the question. So we got 35 minus 14 which becomes 21. We got the answer. अब हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट का आंसर, फाइनल आंसर मिल गया. So we need not write a curly bracket now. So we have now 10 into 20 divided by 4 minus 6. Now we all know, अब हमारे पास ये बड़ा ब्रैकेट आ गया which has to be targeted, and we know that we have to find out the number of terms. जो हमारा हर जगह हर छोटे सम को हमें उसके अंदर देखना है कि इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, और इसके अंदर एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये. बस जैसे ही आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार हो गए. This we have to understand. Now we know we have 21 plus. अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें. We know DM रूल आपका लगेगा, BODM. ऑल राइट, पहले डिविजन और फिर मल्टीप्लीकेशन. 20 डिवाइड बाई 4 इज 5, 5 into 10 is 50 minus 6. So we got the answer for every term, small part of this question. So we have 21 plus 50 which is 70 minus 6 which becomes 64. So this is your answer. So that completes your first question. Now let's go for the second question. Now look at the second question. We all know our small bracket need to be solved first. Let me put a big bracket also here. अब अगर हम लोग सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को देखते हैं तो we know we have this part to be solved and this part to be solved. क्योंकि ये हम बिल्कुल आपस में, ये एक है ये दूसरा है, चाहे तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. और चलो अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नाउ 148 minus 124 we have to solve, that is 2, 4 and 24. All right, we got 24 from this part. Small bracket is solved. अब जब हम लोग कर्ली ब्रैकेट, ये दूसरे पार्ट में आते हैं. इस बड़े वाले ब्रैकेट के दो पार्ट्स हैं. अब अगर हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इस बड़े वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है. तो हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं. एंड वी गॉट द आंसर फॉर दिस. 8 minus 2 is 6. इफ़ यू डोंट ब्रेक द रूल, आपके क्वेश्चन में कभी गलती हो ही नहीं सकती आंसर में. बस सिर्फ रूल्स ब्रेक मत करो. नाउ वी गॉट दिस आंसर. Now we all know we have, again अगर आप कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हो, we have one term this, we have second term this, because we had a minus sign in between which separates the question, this question into small part. आप हर बार एक क्वेश्चन मान के चलो और अपने आप से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पार्ट्स कौन कौन से हैं, और उनको छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करो. नाउ वी नो 5 5s are 25, 50 minus 6. 50 from here minus 6, and we are still keeping the curly bracket because we have not landed to the answer. Final answer अब जब तक ना आ जाए तब तक हम लोग को ये वाले ब्रैकेट्स को हटाना नहीं है. अब कर्ली ब्रैकेट अब हट सकता है because we are getting answer 44 of this curly bracket. Then we have 24 which is inside the big bracket. Now the answer is 4 plus 2 is 6, 68 is the answer. Now let us see the next question, which is the last question. Here we all know that
140 ये एक पार्ट है और दूसरा माइनस ये दूसरा पार्ट है, ये बड़ा वाला। अब हमें मालूम है बड़े के अंदर छोटा और उसके अंदर भी सबसे छोटा, सो ऑब्वियसली वी हैव टू टारगेट। और देखो छोटा और उसके छोटे के अंदर भी एक लाइन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लाइन ब्रैकेट के आंसर के लिए टारगेट करना है। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 6 into 5 which we got the answer for the line bracket। अब हमने लाइन को हटा दिया और बाकी चीज़ों में हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एज इट इज़ लिखना है। चाहते तो ये सॉल्व कर सकते थे बट लेट अस नॉट डू इट। 68 and 140। Now solve this small bracket। 5 6 are 30 plus 7 into 4। आप देखो मैं बता रही थी ना कि इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व करते क्योंकि ये दोनों भी आपस में सेपरेटेड है, बट आई हैव नॉट टच्ड जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ 68 माइनस वी हैव 7 4s are 28 plus 30, this is 140। now 28 plus 30 is 3 4 5 58, 140। 68 minus 58 is 10। From 140 we have to subtract 10, answer is 130। Now this is your classwork, these 3 questions are your classwork। if you want you can renumber your question, this is question number 1 2 and 3। all right, now these 3 questions and I have given the homework also from the book। these are exercise 2.2 and exercise 2.2 question number 2, question number 4 5 and 8। there are 4 questions to do। maybe tomorrow I may send before Monday or on Monday the answers or solution for this also, because these are a bit difficult questions। so but I want you to try first, you see the explanation of these questions। once you understand, I'm sure you can try with full confidence the last homework, and once you do it then I will send later on the answers, the complete steps of these questions, and then you can compare it, okay।